Machephy Eduworld. Good evening, everyone. Good evening, sir. Yeah, good evening. And today what we're going to do is revise the whole of the magnetism. हमने जितना भी पढ़ा है वो भी revise करने वाले हैं. And it's sort of a discussion that we'll have on magnetism and whatever difficulties or problems or doubts you have that we can discuss along with it. So I'll be asking a few questions and you'll be answering them. Of course, you can see your notebook, see your book. So like an open book test, but more of a discussion. So we'll start with something simple, like the Biot-Savart's law. May you tell me the Biot-Savart's law in the vector form? What does it give? And what is the formula for Biot-Savart's law? Vector form. Okay, Apurva, can you tell me Biot-Savart's law? Mayul is having some issues with his mic. What does it give and what is the formula? Sir, can we look into the notebook? Yeah, of course, of course. Equal to integration of I in bracket dl vector into r vector by r cube. Yeah. So it gives the value of current. It gives the value of magnetic field due to a current carrying element. So एक छोटा सा लेंथ वेक्टर ले लिया जाए dl वेक्टर, तो इसकी वजह से पॉइंट P पे, that is r vector away from the dl vector, कितना magnetic field होगा पॉइंट P पे, that is given by the Biot-Savart's law. So in example, if I ask you the Biot-Savart's law, you will write that Biot-Savart's law gives the value of magnetic field by a current carrying element at point P at a distance r vector away. And the formula is like this: dB vector is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r vector upon mod of r cube. So this is a vector form of Biot-Savart's law. So you will write in the exam, you have to write that Biot-Savart's law gives you the value of the magnetic field due to a current carrying length element at a distance r vector away from the length element. Like that you have to write. And if you want to write the scalar form, Apurva क्या लिख सकते हैं यहाँ पे scalar form में? I don't know in scalar form. See, बस mod ले लेना है, इसका mod लेके solve करेंगे तो dl cross r क्या होता है? dl r sin theta हो जाएगा, है ना? इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो dl cross r ये हो जाएगा r into dl into sin theta, और mod of r cube का mod क्या हो जाएगा? दैट इज जस्ट r cube. तो एक r और एक r कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square.
Is this clear? Yes, sir. Yeah. So अभी एग्जाम में क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? What is the magnetic field given by Biot-Savart's law depends upon? So magnetic field can depends upon the current. Magnetic field can depend upon the length. Magnetic field depends upon the sine theta, is directly proportional to sine theta, and the magnetic field is inversely proportional to the square of the distance. इन चार फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड. So this is the Biot-Savart's law. It gives you the This is the Biot-Savart's law. It gives you the magnetic field due to current. It gives magnetic field due to current carrying conductor. Magnetic field due to current carrying conductor. और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को में इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं. Okay. Rishi, tell me the Biot-Savart's law in terms of current density. Biot-Savart's law in terms of current density. Rishit, can you hear me? Other students also means check करना है, notebook में लिखा हुआ है, book में लिखा हुआ है. Then refer to your notebook. You'll find the formula. और दूसरा तरीका है करंट और करंट डेंसिटी में रिलेशन पता है, वहां से भी फिगर आउट कर सकते हैं. Rishit, if you are speaking, I can't hear you. पहले मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, and then I need this in scalar form. तो करंट डेंसिटी J वेक्टर होता है करंट अपॉन A. I की जगह लिख सकते हैं JDA और JA. Rishit, did you got the formula? I can't hear you, Rishit. Maybe speak louder or check your mic. Okay. Either you can find or you can just put this I is equal to JA and you'll get both the relation. और किसी का आ जाए तो वो भी बता सकते हैं. It's like an open book test. सबको find out करते हैं. इस संडे को तो सेम टेस्ट रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही. नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा. और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म चैप्टर पहली बार डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट्स अ होल न्यू कंसेप्ट.
Mehul, if you have the answer, you can type. Or if your mic wala issue, then you can try rejoining. Maybe it will get resolved. Sir, we can substitute JA vector in terms of I. Yeah. तो ये लिख सकते हैं आई डीएल भी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ जाएगा जे ए डीएल तो जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है वही हमारे जे वेक्टर का डायरेक्शन तो और ए डीएल क्या हो जाएगा डीवी सो आई डीएल वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं जे वेक्टर इंटू डीवी एरिया इंटू डीएल विल बी दी वॉल्यूम ऑफ द लेंथ कुछ नहीं बस आईडीएल की जगह जे डीवी पुट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर Nupur, can you tell me the result for this? Anyone? Sir, U naught by 4 pi into J vector dV by R cube. हाँ सो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल की जगह जे लिख देंगे सो इट विल बी जे क्रॉस आर और डीवी स्केलर क्वांटिटी है म्यू नॉट बाय 4 पाई जे क्रॉस आर डीवी स्केलर क्वांटिटी है तो आई कैन पुट इट आउट सेपरेटली डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर का क्यूब और भाई स्केलर फॉर्म में हो जाएगा डीबी वेक्टर इज म्यू नॉट बाय 4 पाई जे डीवी अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा भी आएगा या Mehul, your answer is correct. Okay, then this is a question for everyone. Write the units and dimensions of magnetic field. Find units and dimensions of magnetic field. अच्छा इसके लिए रिलेशन कौन सा यूज करना है सबसे सिंपल वाला ये होता है F इज इक्वल टू क्यू वी पी F फोर्स Q चार्ज V स्पीड D इज मैग्नेटिक फील्ड तो ये रिलेशन यूज करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा ये वाला यूज करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फाइंड द यूनिट्स SI units and dimension of magnetic Nupur, can you tell me the answer? No, Rishit, I can't hear you. Try rejoining, maybe तब ठीक हो जाए. Nupur, tell me the unit of magnetic field.
For Tesla, Yeah. If you want to write Tesla in terms of basic units, then what will you write? जैसे 1 पास्कल को हम लिखते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बेसिक करें तो ये हो जाएगा 1 kg meter per second square divided by meter square. So like this, if you want to convert it into basic units, the fundamental units, then what can you write for this? Tesla is correct. Tesla is the SI unit. So you can write unit of P will be unit of F by unit of QP. So force का unit होता है Newton, coulomb charge का coulomb, and speed का meter per second. Coulomb second होता है Ampere, so you can write it as Newton per Ampere meter. So one way to write this is 1 Newton per Ampere meter. If you want to further break it down, so Newton को हम लिख सकते हैं kg meter per second square. So meter will get cancelled. We'll get this as kg per ampere per second square. So if you want to write the dimensions, so dimensions of magnetic field will become kg है तो m, current है तो I minus 1, and time second है तो t minus 2. So m, I minus 1, t minus 2. Okay, after this, find units and dimensions of mu naught. Find units and dimensions of u naught. And next question will be relate mu naught, epsilon naught, and c. C is speed of light. Mehul, can you tell me the units of mu naught? You can use this formula. Magnetic field is equal to mu naught I by 2R for a 2R for a circle. तो Biot-Savart's law भी use कर सकते हैं. That will give you the same thing. As in mu naught, you will get the relation. To be R upon I. So B का unit R का unit upon current है. Rishit and Mehul, your voice, you're not audible, so please you can write your answer in chats. And do with your mic. Correct data. Resolve whatever the issue is. Nupur, can you tell me the units of mu naught? for Newton by Ampere square. Newton by Ampere square. So magnetic field के लिए हो जाएगा Newton per Ampere meter, and this is meter divided by Ampere. So Newton per Ampere square is correct. And if you want to write it in fundamental units, so kg meter
per ampere square second square. That will be the unit. And then what will be the dimensions of B? Nupur? Dimensions को क्या लिख सकते हैं? From here. For M1, L1, T minus 2, T minus 2. M1, L1, A minus 2 or I minus 2, T minus 2. Some books used to like to write I, some books like to write A. Both are correct. So this will be dimensional. And then we have to relate mu naught, epsilon naught, and C. So relation between mu naught, epsilon naught, and C. So in which relation is C is equal to 1 by root over mu naught into epsilon naught. कभी कभी एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है कि prove that dimensions of 1 by root mu naught epsilon naught is the speed of dimensions of speed. So that will be ready for those type of questions. And Apurva, magnetic field due to a straight current carrying finite conductor क्या होगा? U naught I by 4 pi r Yeah. into sine theta 1, that is angle between the one end of wire to the point, and plus sine theta 2, that is the angle between another end of wire and that point where we are taking the memory. Yeah. So ये वाला angle phi 1 है, ये वाला phi 2 है. Is this correct? Purav, can you confirm this? ये phi 1 phi 2 है? No, sir. Then is this phi 1 phi 2? Yes, the angle between point and the line joining the Perpendicular, na? yes. Yeah. And this shortest distance is r. Okay. After this, magnetic field due to infinite, the straight wire, current carrying wire of infinite, due to a straight long wire. Mehul and Rishit, if you can't use your mic, you can just write the answers on the page and upload it on the group. Do that instead. That will be much easier. आंसर लिखना है और फिर क्वेश्चन नंबर डालना है, सिर्फ आंसर लिखना है एंड ग्रुप में अपलोड करना है. Rishit, it is your turn. Just write down the answers and upload it on the WhatsApp. Mehul's answer for this is correct. It is straight long wire. It is mu naught I by 4 pi r. And due to straight semi-infinite wire, it is mu naught I by 2 pi r. ये रिजल्ट्स तो याद होनी चाहिए. mu naught I by 2 pi r. Yeah, that is true.
यहाँ पे 2 pi r होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए. Anupo, tell me the value of magnetic field at the center of a circular current carrying loop. Sir, mu naught I by 2r. Yeah, that is correct. Mu naught I by 2r. Also tell me, अगर current का direction anti-clockwise है तो magnetic field will be into the plane or out of the plane? For case A and B, center पे magnetic field का direction क्या होगा? Into the plane or out of the plane? Sir, A में into the plane. A में right hand use करेंगे तो out of the plane आएगा. है ना, fingers curl करेंगे loop के around, so it will be out of the plane. And B में fingers curl करेंगे तो thumb into the plane point करेंगे. So this is into the plane. Apurva, you have to tell me the Ampere circuital law, पूरा statement, and then the formula. Sir, according to Ampere's circuital law, the integral of magnetic field density is equal to product of permeability of free space into the current. Current threading through the area. जो क्लोज्ड पाथ है उससे उसके अंदर कितना करंट, ये करंट कैरिंग लूप्स बाहर भी हो सकते हैं. सो नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड. और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी नहीं बोलते, या तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे. एंड द फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ V vector into dl vector is equal to u naught I. B यहाँ पे क्या होगा? ये कांस्टेंट नहीं, B मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से एलिमेंट DL पे. B एक मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर से एट द करंट एलिमेंट. और mu naught is the property of the space and I is the current. Okay. Yes. Then, okay, all of the students do the derivation of this magnetic field due to a straight long solenoid. इसका derivation करना है और मुझे ग्रुप पे सेंड करना है. Magnetic field due to straight long solenoid. इसका derivation करना है. Then you have to send me on the group. अच्छा, जो लोग बुक रेफर कर रहे हैं या नोटबुक रेफर कर रहे हैं, कॉपी डाउन नहीं करना है. You can look at it, understand it, and then write it down. That is okay. कॉपी डाउन नहीं करना है, उसका बेनिफिट नहीं होगा. टाइम लेना है, अंडरस्टैंड करना है, पॉइंट नहीं समझ में आया तो अभी पूछ भी लेना है. सर डायग्राम भी ड्रॉ करना है. हाँ, डायग्राम भी ड्रॉ करना है. एक प्रॉपर 5-10 मिनट्स बस अच्छे से लिख के देना है, जैसे एग्जाम में बैठ के लिख रहे हैं वैसे देना. Okay, yeah, send me the answers. So I will solve this all over again and tell you the
कैसे लिखना है probability exam. Nupur's diagram is like flowing river, and Rishit, he has made just 3 lines. So to make a proper solenoid, भले ही बहुत ही dense बनाने की जरूरत नहीं है, but you have to show that it's a solenoid. Draw it like. And solenoid है तो उसका magnetic field you know कि that is अंदर होता है, and अगर long solenoid है तो it will be a straight uniform magnetic field. So magnetic field solenoid के सिर्फ अंदर होता है. उसके बाद ये दो component होने के बाद then you have to, the most important thing is the Amperian loop. जो लूप है वो प्रॉपरली ड्रॉन होना चाहिए और क्लोज्ड लूप होना चाहिए. लूप मस्ट बी अ क्लोज्ड लूप और उसका एक साइड अंदर होना चाहिए, दूसरा साइड बाहर होना चाहिए. दैट मस्ट यू मस्ट मेक श्योर. एंड देन यू हैव टू मार्क द लूप. Call it A, B, C, D. Then after this, you have to write what different things in this loop means. For example, current flowing through the conductor in solenoid. So current in solenoid is I. So Rishit has written it properly, or all the integrations. But reasons will लिखने की magnetic field क्यों zero हो रहा है. Outside solenoid field is zero, like that. And okay. So diagram बनाने के बाद you have to write की different letters क्या mean कर रहे हैं. Like your current is I. Then number of turns per unit length, that is important. Number of turns per unit length. Per unit length ये use होने वाला है. So I'll write it as n, small. इसके बाद फिर हम आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे. और एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट इट कि हाँ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ. तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लूप पे लगाते हैं, किसी एरिया या वायर पे नहीं लगा रहे हैं, ये लूप में लगाते हैं. एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू V नॉट I, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल होता है B डॉट dl. अच्छा, इंटीग्रल हम कर रहे हैं इस लूप के ऊपर, A से B, B से C, C से D और D से A. तो 4 पार्ट बन जाएंगे B डॉट dl के. यहाँ क्लोज्ड को ओपन करेंगे तो फिर हम ये अंदर वाला सर्किल हटा देते हैं. सो B डॉट dl फ्रॉम A टू B, फ्रॉम B to C, from C to A, then from C to D, then from D to A. Equals to mu naught I. Okay, so then you can write it individually. For B to C, magnetic field is from left to right, and जो loop जो dl vector होगा, अगर कोई small length element लेते हैं यहाँ पे तो perpendicular. So इसके लिए A to B के लिए there will be magnetic field, so that will be B dl cos 0. B से C के लिए it will be B dl cos 90, तो 0 हो जाएगा. Then C to D के लिए again बाहर magnetic field ही 0, there is no magnetic field outside, so 0 into dl into
and D2A के लिए again it will be BDL cos 90. This is mu naught I. तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. सिर्फ ये रह गया इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL that is equal to mu naught I. A से B तक का लेंथ हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL का की वैल्यू हो जाएगी A से B तक का लेंथ. ओके, यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं. आई थिंक नंबर ऑफ लूप्स, या देयर शुड बी नंबर ऑफ लूप्स. तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे लिखना होगा. सो लेट अस से नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम दिस पॉइंट. तो अच्छा, अंदर करंट शो करना है. करंट कहाँ पे आएगा? करंट इस पोर्शन में आएगा. तो यहाँ पे करंट होगा, आउट ऑफ द लूप हो सकता है या इनटू द लूप हो सकता है. सो नंबर ऑफ लूप्स को लिख सकते हैं. नंबर ऑफ इसका लेंथ क्या लिख सकते हैं? लेट अस राइट इट्स लेंथ एज L. तो नंबर ऑफ लूप्स हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लूप पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा? N इंटू L, स्मॉल n इंटू L. ये लिखना जरूरी है, स्मॉल n इंटू L. दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स. ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो L लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे होगा करंट कैरिंग वायर्स, ढेर सारे करंट कैरिंग वायर्स होंगे. तो नंबर ऑफ लूप्स हो जाएगा N इंटू L. So with mu naught I, you have to also write N into L. N into L is the number of loops. और DL का इंटीग्रेशन L ही होगा. So this is mu naught Ni L. L cancel out हो जाएगा. And the final value of magnetic field you get is mu naught Ni. So like this you can derive. तो इसमें पॉइंट्स याद रखने हैं कि डायग्राम होना चाहिए. जो वेरिएबल्स लिख रहे हैं I, N, L, all those you have to write this means this, and then you have to write the Ampere circuital law, then apply Ampere circuital law, and then write the final answer. This is a very important question. Toroid is not that common. Toroid बहुत ही rarely पूछा जाता है, तो board exams में तो नहीं है. But still, do a derivation for toroid. Okay, again, same thing. इसका derivation तो बड़ा easy है. Derive the formula for magnetic field due to a toroid. So here it was question number 11. So that you have to write the 12. Solve for magnetic field due to a toroid and then send it on the. So the trick to making a diagram for this toroid is make two circles. बहुत सुंदर सा डायग्राम नहीं बनाना, दो सर्कल बना लिया. Fine. Make a donut and then just lines etc. to the picture. That would be sufficient. Then an Ampere loop show करना है, so that will be a circular Ampere like this. Look, you haven't sent any proof for this. Apurva and Trishita have sent me already. Okay, after this, you have to. Apurva, tell me what is the force on a moving charge particle in a magnetic field? Force on a moving charge particle in a magnetic field. Apurva, tell me the answer for this. कोई चार्ज है, इसका स्पीड v है and the magnetic field in the region is B. Charge इसका q है, so what will be the force on it?
Nishita have given the answer already. Sir, F vector is equal to Q in brackets V into V vector into V vector. Correct. V cross. और स्केलर फॉर्म में लिखना चाहे तो दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ओके. एंड उसके बाद हमने मोशन पढ़ा था. इफ velocity is perpendicular to magnetic field, अगर velocity perpendicular to magnetic field के, then motion of charged particle is circular. Motion of charged particle is circular. They should tell me the radius of this circle, then time period of the circle. Time period of the circular motion. Of course, charge Q है, mass M. That's it. हाँ, radius is mv by q. Result याद रखना है और derivation भी याद रखना है. Then time period. Time period is 2 pi m by qb. Correct. 2 pi m by qb. So after this, the question is force on a current carrying conductor is magnetic. Force on straight current carrying conductor in magnetic. You should tell me the answer. Current carrying conductor is का length L ले लेते हैं. Current पे I है, small I. Magnetic field is. तो कितना force लगेगा इस पर? First tell me in vector form, then in scalar form. Yeah, ILB. तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं IL क्रॉस. ध्यान रखना है L पहले आएगा, B बाद में आएगा. अगर B क्रॉस L लिख दिया तो गलत माना जाएगा आंसर, बिकॉज L क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस. इसका ध्यान रखना है. L क्रॉस B is not equal to B cross. L cross B, this is equal to minus of B cross. So that's why order you have to remember LB, ILB. Then from 100 to force, that will be ILB sin theta. जहाँ पे sin theta क्या होगा? Theta is the direction between the length of the length vector. Length vector का direction हम current के along लेते हैं. And दूसरा हो जाएगा magnetic. ये वाला angle theta होगा. So that will be ILB sin theta. Then last question will be force on two parallel current carrying conductors. तो parallel wires तो कितना current, कितना force लेगा? Force on two parallel current carrying wires. इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है. सो यहाँ पे फोर्स नहीं आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है. Who to tell me the value? Newton per meter unit होता है. So force on two parallel current carrying wires. Sir, will it be 2 ILB sin theta? नहीं,
एक वायर की वजह से दूसरे वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पहले वो निकालते हैं। फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ILB में पुट करते हैं एंड देन वी गेट दिस रिजल्ट। mu naught I, yeah, that's right. So this is mu naught by 2 pi I1 I2 by R. इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है नोटबुक में, जस्ट गो थ्रू इट, कोई डाउट है तो क्लियर कर लेते हैं हम। So this is the force between two parallel current carrying wires. So I'm thinking of taking a class tomorrow morning instead of evening. Would that be okay? कोई क्लास है मॉर्निंग में अपूर्व? No, sir. Okay. Nupur, do you have any class morning? Sir, 11 to 1 है. 11 to 1 and 7 to 9 is Rishit का. 9 to 11 रख देते हैं फिर 12th class. Just confirm 9 to 11 for tomorrow morning. Rishit has confirmed. Yes. Puro, is it okay for you? Yes. Okay. Okay, tomorrow 9 to 11 we'll take the class. And magnetic field का बचा हुआ portion discuss करना है, as well as two three worksheet. थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बनाने में worksheet. So, okay. So much time left, we can also revise galvanometer. Okay, next question is torque on current carrying loop. Torque on current carrying loop in magnetic. Current carrying loop in magnetic. You could tell me the answer. Formula in the vector form, then in the scalar form. Anyone can tell me the formula? Torque on a current carrying loop in magnetic field. Magnetic moment mu लेते हैं, magnetic field B ले लेते हैं. MBC अगर MB लिखेंगे तो that is scalar form. So MB sin theta लिखना चाहिए. Or you can write M cross B. M cross B, that is MB sin theta. And M vector form define करते हैं number of turns into current into the area vector. यहाँ से definition आता है of the magnetic moment. So whenever you keep a current carrying loop in a magnetic field, it will experience torque. और फिर हम potential energy भी define कर सकते हैं इसी loop पर, that is minus M dot B. This also we have proved. And then comes the moving coil galvanometer. So phi by I is equals to NAB by C. So what is phi? Phi is the deflection. Phi is called the angle of deflection. I is the current, of course. N is the number of turns. A हो जाता है area of loop. B जो permanent या external magnetic field है, उसकी वैल्यू है magnetic field. और C क्या होता है? C वायर को रोटेट करने में रेजिस्टेंस होता है. F is equal to kx होता है, वैसे tau is equal to g theta होता है और c theta होता है. So C is called the torsional constant. ध्यान रखना, फॉर्मूला याद करते टाइम फॉर्मूला के लेटर्स क्या मीन कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए. तो इसका प्रॉपर डेरिवेशन हमने किया हुआ है. So you have to go through that.
several times before it gets memorized. Moving for quite galvanometric tricky topic hota hai, even for the teachers. So make sure that you understand this. अच्छा 5 by I को हम क्या बोलते हैं? That is current sensitivity. है ना? इसको चाहे तो galvanometer का फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं. Formula can be remembered like this: I is equal to C upon NAB5. तो मतलब करंट को बढ़ाएंगे तो फाई एंगल भी बढ़ेगा, तभी वो डायल रोटेट होगा. तो 5 by I को हम लिखते हैं करंट सेंसिटिविटी, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट एंगल, दैट इज करंट सेंसिटिविटी. 5 by I हो जाएगा NAB by C. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, NAB by C. Then we have voltage sensitivity. Voltage sensitivity. So voltage sensitivity, that will be 5 by V. So that is just NAB by CR. फिर उसके बाद conversion of galvanometer into ammeter into voltmeter, that we already studied in the previous chapter. Keep noting this down. ये सारे formulas हम एक जगह लिख रहे हैं. After this page. After this, we have magnetic field of a magnetic dipole. Magnetic field of a magnetic dipole. So पहला होता है end on position, और दूसरा होता है broad side on position, इसको इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं. This is the broad side on. So end on position मतलब मैग्नेट के लेंथ के अलॉन्ग, that is the end on position. सेंटर से जो लेंथ लेते हैं that is your R, और मैग्नेट का लेंथ ले लेते हैं 2L. So इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है that is I'll just write the reduced version, mu naught by 2 pi or mu naught by 4 pi into 2m upon r cube वेक्टर फॉर्मूला लिख सकते हैं. और दूसरा पोजीशन होता है ब्रॉड साइड ऑन में that is axis along, axis के along. Strength is L 2L. ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है. छोटा मैग्नेट is acting like a magnetic dipole. This point is r vector away. This is the point पे जहाँ पे magnetic field निकाल रहे हैं, and value will be that is half of the this one. So this is just like the electrostatics for a dial. Okay, after this, you must know angle of declination, angle of depth. Angle of declination and angle of depth. Definition पता होना चाहिए plus concept भी clear होना चाहिए. Diagrams नहीं पूछे जाते हैं, but इनका questions में जरूर आते हैं. Angle of declination and angle of depth. Okay. Okay, keep today's class up to here. Tomorrow we can start with a new topic, that is electromagnetic induction.